ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਟਵਾ ਉਤਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੱਜੀ ਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਟਵਾ ਨਾਟ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਅਸੀਂ ਆਟਵਾ ਹੀ ਉਤਰਨਾ ਹੈਗਾ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਯੂ نو ਐਂਡ ਨਾਓ ਦੇ ਇਨਵਾਈਟਡ ਮੀ ਸੋ ਇਟਸ connection, yeah, I can feel that. You know, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਉਥਲੈਂਡ ਗਏ ਸੀਗੇ so it's a bit heartwarming, you know, these things. You want to have water party? So we're not associated with any Gurdwara Sahib, we're not associated with any religious organization. ਉਦੋਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ये सुपिंदरजीत है ना जो आपके सामने बैठा है 2012 में मैं रॉयल ऑटवा जो मेंटल हॉस्पिटल है ना उसके पार्किंग लॉट में बैठा था दिसंबर का महीना था बिकॉज आई वाज ऑन स्ट्रगलिंग विद दीस थिंग्स। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों, अगर आप इस पॉडकास्ट को कनाडा की नेशनल कैपिटल यानी कि ओटावा सिटी में बैठकर देख रहे हैं तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उसकी इंट्रोडक्शन की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप ओटावा में नहीं हैं तो आपके लिए आज के हमारे पॉडकास्ट हैं सुपिंदरजीत पाजी। सुपिंदर पाजी ने ओटावा में यू फाउंडेशन के नाम से एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया जो कि सोशल एक्टिविटीज़ से जुड़ा है। इस बैनर के अंडर मेन 3 एक्टिविटीज़ ये करते हैं, जिसमें पहली है लंगर फॉर हंगर, दूसरी है अचिंत मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और तीसरी है द सॉक्स बॉक्स। इस पॉडकास्ट में हमने सुपिंदर पाजी की पर्सनल, प्रोफेशनल और इमिग्रेशन जर्नी के बारे में भी बात की है। इसी बातचीत के दौरान सुपिंदर पाजी इतने भावुक हो गए कि अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए। सुपिंदर पाजी की अचीवमेंट्स की अगर बात करें तो बहुत सारी ऐसी जगहों पर जहाँ पर साउथ एशियंस की प्रेजेंस नेग्लिजिबल है वहाँ सुपिंदर पाजी ने साउथ एशियन लोगों को रिप्रेजेंट किया है। जैसे कि कनाडा की सिटीजनशिप ओथ सेरेमनी जो होती है उसमें सुपिंदर पाजी को मौका मिला एज ए गेस्ट स्पीकर बनने का। ऐसे ही रिमेम्बरेंस डे पर उन्हें एज ए गेस्ट इनवाइट किया गया और बहुत सारे अवार्ड भी सुपिंदर पाजी ने लिए हैं, जिसके अंदर ओंटारियो वॉलंटियर अवार्ड भी एक है। तो चलिए दोस्तों, ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाते हैं सुपिंदर पाजी के साथ। दिस इज सुपिंदरजीत सिंह ऑन चंद्र शेखर आर्या टॉक। सुपिंदर पाजी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल पाजी, सत श्री अकाल। की हाल चाल है? शुक्र है जी, very good to see you today. थैंक यू पाजी। आपको जब मैंने इनवाइट करना था ना इस पॉडकास्ट के लिए तब आप मेरी टॉप 10 की लिस्ट में से एक थे पाजी, बट आपका शेड्यूल बिजी रहता है। मुझे लगा था कि विंटर्स में शायद थोड़ा सा स्लो रहता होगा, पर विंटर में भी आप बिजी रहते हो, आपकी एक्टिविटीज़ विंटर्स की भी है। तो सबसे पहले तो आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद टाइम देने के लिए और हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज पे आपका बहुत बहुत स्वागत भाजी। थैंक यू जी, थैंक यू टू ऑल द लिसनर्स। तो भाजी आपने अगर मेरे कोई कपल ऑफ पीछे पॉडकास्ट देखे होंगे ना तो मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन है। वैसे तो मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं आपसे पूछने के लिए, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो इतनी सारी चीज़ें निकल के आई है। आई एम नॉट श्योर कि मैं उससे आधी भी अगर कवर कर पाया इस पॉडकास्ट में तो आई विल फील लकी। तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है पाजी कि आप कनाडा कब आए थे और क्या आपने प्रोसेस था? आई मीन आप कौन से वीज़ास पे आए थे और इनिशियली डेज आपके कैसे रहे थे? सो आई केम इन 1998 नवंबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਠੰਡ ਸੀਗੀ, ਯੂ نو ਵੀ ਕੇਮ ਵਿਦ ਅ ਫੈਮਿਲੀ, ਮਾਈ ਪੈਰੈਂਟਸ ਵਰ ਵਿਦ ਮੀ। ਸੋ ਡੈਡੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਧਾ ਆਟਵਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। Okay. We came as a permanent residence. Okay. ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है बात यहाँ पे ना, जो डायरेक्टली ओटावा आने वाले लोग हैं ना ये बड़े रेयर हैं। तो हाउ डिड यू कम टू दिस कंक्लूजन? एक हास्य दी गल शुरू ची थानू पॉडकास्ट दे बिगनिंग दे विच। सो व्हेन वी वर गेटिंग ऑफ फ्रॉम द प्लेन इन Ottawa and the used to be the plane, the British Airways from London to Ottawa and right away it goes to finish at Toronto. ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਟਵਾ ਉਤਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੱਜੀ ਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਟਵਾ ਨਾਟ ਟੋਰਾਂਟੋ
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਅਸੀਂ ਆਟੋ ਹੀ ਉਤਰਨਾ ਹੈਗਾ। हाँ, आई मीन इट्स सरप्राइजिंग। मुझे भी मतलब लगता है कि क्योंकि जितने मैं इन दिनों लोगों से बहुत बात कर रहा हूँ, राइट, तो सबका समझ में आता है कि फर्स्ट पॉइंट तो कहीं ना कहीं उनका टोरंटो रहा है, ब्रैम्पटन साइड वाला एरिया रहा है, एंड देन दे You know, especially back in 1998, it's 25-26 साल हो गए हैं, we didn't have a lot of population. अपनी इतने population इतनी नहीं थी ऑटवा में ना। बिल्कुल। And you know, like CGV, it was like more North Indians, but it was not very visual. Like you That's know, right. traveling through on the bus or bus station or something. माइनरेस्ट माइनॉरिटी हो गई वो। You barely see अपना बंदा. हाँ, ठीक बात, ठीक बात। You know, even in school, like Algonquin College, there was not a lot of people there. ओके ओके, कूल। तो यहाँ आपने कॉलेज का नाम लिया, मैं पढ़ रहा था कि आपने 2002 बैच में अल्गोनकिन कॉलेज से पास आउट हुए आप। हाँ जी, तो हाँ जी। क्या क्या स्टडी करी थी मैं आपने? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की थी यार। ओके ओके, दैट्स नाइस। हाँ जी। तो आपको कुछ चैलेंजेस जो आमतौर पे इमिग्रेंट्स के होते हैं, नहीं आते हैं जब वो, आपकी स्टोरी थोड़ी अलग है क्योंकि आप फैमिली के साथ आए थे। तो मैं यहाँ 2-4 मिनट लगाऊंगा। क्या एक्सपीरियंस था आपका? क्या वो चैलेंजेस आपने ही फेस किए थे इनिशियली, जो स्ट्रगल काइंड ऑफ जिसको बोलते हैं? Struggle is always there. Doesn't matter people came 100 years ago, 50 years ago, 25 years ago, or even today, right? The struggles are always going to be there. You know, I wanted to share with all the listeners. But kiya the hard work pays off. You know, so when we came, the struggle was, of course, English. Struggle was, you know, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਚੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਉਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ। There was no cell phone. And you know, we didn't know anything about it. We learned everything on the go when we got here. You know, even jobs, getting a job as a brown person or as a, you know, turban wearing, guy, it was not that easy. Especially the service industry, you know, or counter at the front counter, customer service, or at the stores. Like when ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, you know, Walmart or anywhere, अपने बंदे लिख देना। ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ, you know, everywhere ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। But back then it was different. If they give you, you're lucky to have even a job overnight stocking, you know, shelves or. I started my first job was at Filtron. There was a factory, Colony Road ਤੇ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਗਿਆ, I was looking for, you know, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, all we need is some kind of money to survive. ਬਿਲਕੁਲ। You know, doesn't matter student, family, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਭਾਜੀ। ਤੇ ਵੀ you know, the Filtron, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਨਿਸ਼ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। You know, you know, the struggles are always there. You know, but I always believing it in yourself and hard work eventually pays off. Sooner than later, आज नहीं 2 सालों ਨੂੰ 4 सालों ਨੂੰ किते ना किते तक काम आता है। दैट्स नाइस। ये जो स्ट्रगल वाला पॉइंट है ना, इस पे मैं वापस आऊँगा स्टूडेंट से कनेक्ट करके, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं आपका ना प्रोफेशन जो, क्योंकि देखो मैंने जितना आपको जाना है ना कम्युनिटी के अंदर, कुछ टाइम हो गया है जब हम आपस में जानते हैं, तो मैं आपको सोशल एक्टिविटीज़ की वजह से जानता हूँ। बल्कि मुझे पता भी नहीं है कि आप बाय प्रोफेशन करियर कि आपका प्रोफेशन क्या है। इफ़ यू वुड लाइक टू मेंशन कि आप प्रोफेशनली अभी क्या करते हो? प्रोफेशनली मैं I personally believe I'm still doing सेवा, even professionally. I'm a government servant, है ना। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਲੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ them, maintain the buildings, recreation centers, libraries. So I work in a City of Ottawa infrastructure department. Oh, okay, that's interesting. So you are engineer by profession? Project manager. Cool. In construction? In real estate? Basically, project manager is just any kind of projects. Okay, interesting. Yeah. तो भाजी
अगर ओटावा के जो भी बंदे हैं वो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं ना, जी जी, तो वो वेट कर रहे होंगे एक वर्ड का नाम लूँ मैं, क्योंकि आपके साथ बैठा हूँ। जी जी, एंड दैट इज़ लंगर फॉर हंगर। थैंक क्योंकि पूरा ओटावा शायद इस इनिशिएटिव को जानता है और इसके साथ सबसे पहला नाम जो आई नो देयर इज़ अ टीम, पूरी वॉलंटियर की टीम है, बट सबसे पहला नाम आपका ही दिमाग में आता है, सुविंदर पाजी, राइट? तो वहीं से स्टार्ट करेंगे यार कि 2 क्वेश्चन है मेरे यहाँ पर, उनको आप एक साथ आंसर कर सकते हो। जी। पहले तो कि इसका ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप जो है वो क्या है, क्योंकि देर आर मल्टीपल थिंग्स यू आर डूइंग, राइट? तो ये लंगर फॉर हंगर कहाँ से आई चीज़, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये इनिशिएटिव आपका है या कहीं बाहर का इनिशिएटिव का चैप्टर आप यहाँ चला रहे हो, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। और उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, सबसे पहले कि लंगर, ये जो लंगर वर्ड है इसके बारे में भी कुछ बताओ कि लंगर वर्ड का मतलब क्या है। इवन आई नो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इवन गुरु नानक साहिब जी ने जो ये चीज़ शुरू करी थी, आई मीन क्या वो कनेक्शन है, वो एग्जैक्टली क्या स्टोरी है उसकी? So first of all, Chander Paji, ke it's a team effort. I'm just a face, happen to be, 100%. and it's a team effort. Even Aj, I was really wanting to bring the whole team. Okay. But it's a jaga in That's tight, right, and maybe the yeah. next episode we are gonna have to do is like get a bigger space and bring all the team members. So let's do it next time at some of the seva place. Perfect. That's awesome. So, ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਲੰਗਰ is, we all know, it started from Guru Nanak Sahib, and no doubt ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, everywhere from end to end, ਚਾਹੇ ਉਹ India ਹੋਵੇ, Canada ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ Africa ਹੋਵੇ, everywhere, right? And this is such a beautiful concept. And so Langar for Hunger, first of all, I just wanted to clear that with everyone. Of course, Langar word is a Punjabi word, and Seva is concept is from Guru Nanak Sahib. But Langar for Hunger is not a religious organization or religious, we are trying to promote anything. So we're not associated with any Gurdwara Sahib, we're not associated with any religious organization. And we are just a grassroots organization, and we like to keep it as a grassroots. Wow. For as long as we like. Kyunki, we have volunteers from Jewish to Muslim to Hindu, Sikh, like from Muslim, like you name it, atheists. We people have, we have a volunteer from LGBTQ community. Like, so the idea was to bring everybody to work for the humanity. Humanity. Yeah. Instead of just doing it for the religion. Correct. That was something very important. नहीं, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने मेंशन किया है। इसका रीज़न ये है कि मैं आई वाज अंडर एन इम्प्रेशन कि शायद किसी गुरुद्वारा की या तो कोई कमेटी या किसी टीम के अंडर ही हो रहा होगा ये काम, मुझे भी ऐसा लगता था। So Chander Paji, before we get into your question, I would like to share कि ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ start ਹੋਇਆ when I came to Canada, and Seva was always involved, right? Even back in India, Gurdwara Seva karni ya kite bhi matlab community ch jithe bhi hona ka seva chaldi hai, right? When I came here, of course, first couple of years were very struggling years. So, but after that, I started working, I started volunteering with the Heart and Stroke Foundation. So it's been like 17 years I've been with them, Seva karde nu is February de vich. And what I notice is that, the Gurdwara, Mandir, churches, even, Jewish, like every community doing a great job, right? There's no doubt about it. Bilkul. But they are like, apne Gurdwara Sahib langar hunda hai, all mandir de vich ya mosque de vich, they all do a great job in their community. But my idea was that, hey, instead of promoting the religion, why don't we promote humanity? क्योंकि अखीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਹੈ ਨਾ।
ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਲੀਵ ਕਰੋ, but end of the day we are human, and to me our religion is humanity at the end of the day, right? So the idea was to set up a platform ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ. Religion is great, don't take me wrong, I'm a proud Sikh, and I go to Gurdwara Sahib, and but the thing is, at the end of the day, promoting humanity is the good thing, best thing to me. Yeah, nice. So, your question about Langar for Hunger. So, the main umbrella is U Foundation. Okay. U is a letter U. Okay. U Foundation, and it has 3 projects, initiatives underneath. One is a Langar for Hunger. Langar for Hunger te dooja hega Achint Universe. Achint is a Punjabi word. मतलब चिंता नहीं होनी. जी. Achint is more mental health initiatives. And the third one is a SOX box, SOXBOX. Correct. So Langar for Hunger is more like a seva oriented, So like, back ਜਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ flood ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ. So our team was helping out in the flood, tornado, and COVID. Like during the COVID, first every lockdown, we had a unlimited, like basically Langar was on. We partnership with the others restaurants, and ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ anybody can go and say they are from Langar for Hunger looking for a meal. No question, no answer, no ID, no nothing. Anybody can walk into those particular restaurant, and at the end of weekly, restaurants were giving us a report that this many meals were went out, So it was a continuous during COVID. So one is a Langar for Hunger. Of course, we do monthly event, going to the shelter, cooking food, going to organizing blood drive camps. Okay. The dooja hega, which is personally very close to me, is Achint Universe. So to me, people were struggling with mental health. Yeah. And especially in our Ottawa, South Asians, we didn't have a lot of help available. That's right. So with the Achint Universe, we promote better understanding of mental health, suicide prevention. ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ suicide ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, especially in even in Ottawa, right? In the last 3-4 years, we started to hear a lot of news about suicide. So we do suicide prevention, mental health first aid, and various other. And the socks box, everybody knows. We collect socks. We just finished our 8th year. We started from 44 pairs, and now we hit 40,000 pairs. Wow. That's nice. Paji, आपने जैसे ये एक्सप्लेन किया, राइट, मैंने आपके ना इमोशंस को फील किया जब वो अचिंत फाउंडेशन के बारे में आप बता रहे थे. यू नीड नॉट टू डिस्क्लोज और समथिंग, बट मेरे पास एक क्वेश्चन है वहाँ पे जी, ये कि कोई पर्सनल स्टोरी आपकी अटैच है उस चीज़ से? Yeah. If you are comfortable to share, I would be happy to know that. And if you think कि आप comfortable नहीं हो, तो we can skip it. Let's pass this question. Okay. Then we'll come back. Yeah, for sure. तो जैसे आपने बताया ना कि मैं आपको बोल रहा था कि रिलीजियस मुझे लगा कहीं ना कहीं वहाँ से शुरू हुआ होगा. देन आपने बोला कि डिफरेंट रिलीजन के लोग भी यहाँ से जुड़े हुए हैं सब कुछ. तो अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिकली मिल गया उससे, क्योंकि आप वन ऑफ द फ्यू गाइज इन ओटावा हो जिसको हम बोल सकते हैं मैन विद नो हेटर्स. वो शायद इसी वजह से शायद वो है कि यू आर नॉट जस्ट प्रमोटिंग अस only on a religious roof or something. तो कहीं ना जब हम रिलीजन को ज़्यादा पुश करते हैं या प्रमोट करते हैं तो हेट्रेड ना कहीं आपके साथ घूम जाती है वो कहीं ना कहीं. Yeah, पाजी, I like to say कि जो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ ना, मैं पंजाबी हिंदी च कहना, इंग्लिश नहीं कहूँगा क्योंकि so more people can understand. जी. ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਇਟਸ ਆਲ ਆਰ ਫਰੈਂਡ. You just need to find those friends.
ਜਦੋਂ ਜੇ if we start carrying the hatred, any hate, then we start, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ. There you go. ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ. But when you walk in the morning, get dressed and go out from your home, think about it. Imagine ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਇਹ ਦੋਸਤ ਹੈ. Don't look for a gora hai, ke kala hai, ke brown hai, ke South Indian hai, ke Sri Lankan hai. We all are one. There's no... You tell me, everybody so far, even the scientists, haven't got a different color of blood. Yeah. ਸਾਰਾ ਦਾ ਲਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਰੇ ਦਾ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਦਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ रंग. नाना पाटेकर की मूवी का डायलॉग याद आ गया, वो पत्थर मार के हाथ पे खून निकालता है हिंदू का, मुस्लिम का, बोला बताओ कौन सा हिंदू का है, कौन Exactly. भाजी ये जो बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट बोला आपने कि व्हाट वी थिंक, राइट, वही फिर हमें दिखना शुरू हो जाता है ना. एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे मान लो कि हमें गूगल पे कुछ सर्च करना है, राइट, तो जो हमारे दिमाग में है ना वही सर्च करते हैं. अगर मान लो किसी चीज़ के बारे में बुरा हम सोच रहे हैं कि यार वो इतनी बुरी है, तो हम ना गूगल पे भी लिखेंगे कि वो इतनी बुरी है क्या, यूँ नहीं लिखेंगे वो अच्छी है या बुरी है, हम लिखेंगे वो कितनी बुरी है. You know what I mean? तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ बोली आपने. So I would say all the listeners is everybody is very familiar with AI technology. That's right. Nowadays. That's right. Why don't we train our brain to be AI? To be act as AI and start thinking positive, then positive will start coming to you. Exactly. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਬਿਲਕੁਲ. And I can share tons of incidents, seriously, and people don't even sometimes believe it. Like ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਉਹ ਕੰਮ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया भाजी. And I believe in universe. Universe is basically no face, no name. कोई religion का थब्बा नहीं लग्या हैगा. पर की है कि the universe will help you. Okay. All you have to do is just take it one step. जिदन तुसी एक step दरवाजे तो ले लिया ना बाहर. And again, Chander Paji, I wanted to mention is but your heart and it should be clean. Je tusi, matlab jeda tusi, you're not hating anybody, universe will come and guide you. And I can share tons of, incident stories in the last 10-15 years. I mean, let me know if we have a time. I'll love to share those ones. For sure. We'll come on that as well. यहाँ पर ना हम एक स्टेप आगे जाएंगे पाजी, उससे पहले एक स्टेप पीछे चलते हैं. जो मैं लंगर का मतलब आपसे पूछना चाह रहा था ना, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ओरिजिनली जब गुरु नानक जी ने स्टार्ट किया था ना, तो क्या मोटिव था इसका लंगर को शुरू करने का. डेफिनेटली कि उन्होंने अगर कोई इनिशिएटिव स्टार्ट किया तो एक विजन होगा इसके पीछे कुछ ना कुछ, और नीड ऑफ द आवर रही होगी वहाँ उस वक्त, जरूरत रही होगी उस चीज़ की. तो वो क्या चीज़ थी वो? क्योंकि गुरु साहब was very गुरु नानक साहब was very positive and मतलब ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਥੇ. ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਥੇ. ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. There was few different reasons, but I'm just going to share a couple. I can't have everything, but ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਸੀਗਾ. I was just actually listening to a topic yesterday. ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੁਗਲ ਐਂਪਰਰ ਆਇਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੇ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ. Okay. If you wanted to see me, sit down on the floor with other people, ਕੋਈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈਗਾ. That was one of the things. Guru Sahib wanted to make equality. Okay. Second thing was they wanted to promote compassion. And to me that was very important. Just on a sideline, so to me the compassionate action, compassion sare ch hundi hai. Everybody at their home they are very compassionate. But compassion ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੋ. If you don't take the action, ਤੁਸੀਂ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਟੀਵੀ ਲਾਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ. And I always say compassionate action. I'm loving it. Compassionate action. When you start taking the action, and earlier you said,
universe will come and guide you. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। So Guru Sahib was the same thing. They wanted to create equality. They wanted to have a compassionate society, you know. जिन्ने hate है यार, look at these nowadays, like last 10-15 years, you know. कदे किते war हो रही है, कदे किते war हो रही है, कदे किते अमेरिका, you know, चला गया, कदे किते लड़ाई हो रही है. It bothers me when I hear these in news, right? Yeah. But do we need it? Like, as a humanity, do we need start killing somebody? You know, That's right. we don't need it. इन्हीं चीजों से तो निकल के आए हैं हम हजारों साल पहले। बिल्कुल। पहले यही तो हो रहा था, बिल्कुल। राइट? मोर सिविलाइज्ड हुए हैं हम, वी आर गोइंग बैक टू अनसिविलाइज्ड। मैंने लगता है कि अपनी सोसाइटी सिविलाइज्ड होके वी आर गोइंग बैक, राइट? ओके, जब आप ना भाजी कंपैशन को लंगर से जब कनेक्ट कर रहे हो, तो क्या वो सेवा वाला पोर्शन उसके अंदर आ जाता है कि क्योंकि लंगर में आप जब जा रहे हो तो आप वहाँ सेवा भी करते हो, राइट? जी जी जी, तो वहीं से कनेक्ट हो रहा है। तो ये उस वक्त भी होता था पहले जब स्टार्टिंग में जब लंगर हुए थे, तब भी सेवा का कंसेप्ट साथ में चल रहा है? तभी सेवा तो शुरू से चल रही है यार। you know I mean you've been to gurdwaras many times, you know. सेवा इवन अपने इंडिया से यार आर्म्स नहीं किसी ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ। हाँ, निर्जला 11 पे वो कोई और ठंडा पानी गर्मियां च पिया देता, you know. These are seva. Here in Canada, just holding a door for somebody, you know, this is seva, like giving a smile and listening to somebody and say, how's your day going? ये सेवा है क्या? सेवा, a lot of people have a misconception, but यार, you know, I need $1,000, I need this many $100,000 to do seva. No, seva does not require money, just the thoughts. Once you have a thoughts, that's it. या 100%। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो एग्जांपल लिया ना, बोला कि हमारे तो इंडिया में हर जगह सेवा है ही है। इवन जैसे अपने गुरुद्वारे में लंगर बोल देते हैं, या मंदिरों में भंडारे भी लगते हैं, राइट? या फिर वो सड़क के ऊपर टेबल लगा के वो पिंक पानी पिलाते हैं, जो पिंक वाटर दे रहे हैं गर्मियों के अंदर, राइट? ट्रकर्स को रोक के, वो दैट एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ सेवा, राइट? दैट्स नाइस, इंटरेस्टिंग। Even, you know, Paji, I wanted to say it in the podcast. You're doing also सेवा। अरे पाजी, आपका बड़प्पन है तो पाजी। क्योंकि पता ਕੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, profession ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ? ਕਰਦਾ, ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? But what you are doing is also seva, right? You're showcasing or you're, you know, sharing the stories with other people, you know, all over the world using your YouTube channel. So, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ। Seva doesn't have to be ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਝੋਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ ਤੇ I'm planning for seva. No, you don't plan for seva. Seva should be built into you ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ thoughts ਹੈ, ਸੋਚਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि आप जो भी प्रोफेशन में हो, लेट्स से कोई जॉब भी कर रहे हो, तो उसमें भी सेवा वाला भाव साथ में लेके चलोगे तो यू विल बी सेटिस्फाइड। बिल्कुल ਭਾਜੀ, that's what you asked me earlier question about ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। And I, of course, I work with the city of Ottawa, which is a government, municipal government profession. So, you know, that's why I said ਉਹ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਆਟਵਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਟਵਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਵਨਸ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਯੂ ਡੇ ਵਿਦ ਦਿਸ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਨੋ ਮੌਰਗੇਜ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਯੂ ਨੋ ਵਟਐਵਰ your profession is, but if you think about that, hey, I'm not gonna exploit anybody. At the end of the day, I'm doing my job, what is expected. मैं उतो कुछ, you know, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। This is seva. You know, once you go with that mindset, it's not a rock. Like, it's not, you don't have to, at the end of the day, what I'm saying is you have to train your mind to act like this. That's right. So ਤੁਹਾਡੇ built in ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। No, you don't, there's no planning in this one. ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ podcast ਹੈ, I ask you, did you plan? ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, I didn't plan anything. We're just gonna talk. ਬਿਲਕੁਲ same thing. It should be a built in ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ उठो, कुछ भी तुसी कर रहे हो, नाल दी नाल थोड़ी सेवा चलती रहनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने अपने प्रोफेशन से सेवा को जोड़ दिया ना, तो आपका भाव जो होगा ना, वो सेवा वाला हो जाएगा। तो यू विल नॉट डू एनी बैड थिंग्स फॉर द गाइज, राइट? तो ऑटोमेटिक। और कितनी प्यारी बात बोल दी भाजी आपने।
जब आपने सेवा को प्रोफेशन से जोड़ दिया ना, दैट विल बी द पॉइंट जब आपको अपने प्रोफेशन पे प्राउड होना स्टार्ट हो जाएगा। Exactly. अदरवाइज आप हमेशा डाइस ही रहोगे, सोचोगे नहीं इसमें मजा नहीं आ रहा, उसमें मजा नहीं आ रहा। दैट्स नाइस। और ये जो लंगर वर्ड है ना पाजी, उसकी भी आपने ना स्पेशली ओटवा के अंदर डेफिनेशन को और इम्प्रूव कर दिया है, क्योंकि लंगर वर्ड को भोजन और खाने के साथ जोड़ा गया हमेशा से। आपने उसके साथ ब्लड डोनेशन, उसके बाद आपने ये सॉक्स की जो बात करी, उसकी डोनेशंस की बात करी, इवन मेंटल हेल्थ की बात करी। ये इतना सारा सब कुछ जो मीनिंगफुल टॉक्स है वो सब आपने एक बैनर के नीचे। So, Chandra Baji, what we believe and what we trying to promote in last 7-8 years is helping, and this is यही साडा एक motto भी हैगा यू फाउंडेशन ਦਾ, helping others improve your own mental health. बिल्कुल। So, I'll give you an analogy, and I usually say this analogy, maybe, so I use it as a tree, planting a tree. ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੇੜ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਕ ਯਾਰਡ ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਖੇਤਾਂ ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, whatever. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, but you're doing it for your family. And it's not selfless because you're waiting for the tree to grow ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛਾਂ ਦੇਵੇ, right? This is the one kind of seva. The second seva is that the planting a tree and leaving it for someone else, right? ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਐਪਲ ਲੱਗੂਗਾ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਗੇ, right? ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, that's very interesting. I want to spend a couple of minutes on this one. ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟਰੀ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਛਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੈਡੋ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ। and you're not expecting anything back from that tree, 100%, right? Other than of course the oxygen. ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਫਰੂਟ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਮਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਰੂਟ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਰੂਟ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, absolutely. You're not eating it, but you are enjoying ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਟਰੀ ਤੋਂ ਫਰੂਟ ਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, so ਜਿਹੜੀ third type of ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਾ, that's what we promote in our youth foundation is ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਕਿ mental health is very, very important to this project. Seva is one concept and Langar is one thing, but the main thing is we wanted to promote mental health by doing act of kindness, by doing seva. That could be, Langar, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ, Langar is not just ਕਿ, a lot of people think ਕਿ okay ਯਾਰ Langar ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਵਰਤਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੰਗਰ, ਲੰਗਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ, how you talk, the langar could be just organizing a blood drives, ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 15 blood drives ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਓਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, and the 16th one is coming up in April, this April. So again, blood drive is my favorite one because you know what, again ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਲੱਡ ਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਵੀ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਕਿ ਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ? whoever the needy person is, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਲੱਡ ਹੀ ਹੈ, right? So to me, it's more than just a langar we eat. It's basically a compassion, blood drives, helping others. Mental health organizing seminars. ये अभी आपने ना ब्लड डोनेशंस की बात करी, तो मैं इस पॉइंट को आई विल टेक एज एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि रिसेंटली विक्रम बत्रा पाजी की हेल्प की वजह से मुझे भी एक मौका मिल रहा है कि भाई CBS की पार्टनरशिप में मैं ब्लड डोनेशन को प्रमोट भी करूँ। तो आई एम टेकिंग दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। आई वांट टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, स्पेशली जो लोग कनाडा में हैं, हमें हर महीने बहुत सारे ब्लड डोनर्स की रिक्वायरमेंट रहती है, और जितने भी आप
क्रिटिकल और इमरजेंसी में ब्लड लॉस के केस देखते हो, इट्स नॉट ए सिंपल प्रोसेस, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड इट स्टार्ट फ्रॉम यूर थिंकिंग. जब आप सोचते हो इस बात को कि आज मुझे ब्लड डोनेट करना है, ये वहाँ से स्टार्ट हो जाती है. तो नेवर हेजिटेट. और इस पूरी प्रोसेस की जानकारी के लिए आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, CBS की वेबसाइट पे जा सकते हो, एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं सारे लिंक्स और फ़ोन नंबर जो है वो मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ से आप अपनी और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो. तो पाजी, कमिंग बैक टू आवर टॉक, कि नो डाउट आपने लंगर के उसको बढ़ा दिया है इस डेफिनेशन को, एंड आई एम प्रीटी हैप्पी फॉर दैट. यहाँ ना मैं 2 चीज़ों पे बात करूँगा पाजी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन पे. नंबर 1, जो वॉलंटियर करते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे, इस प्रोसेस के ऊपर बात करेंगे हम लोग, राइट. और दूसरी हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के ऊपर. और मैं इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ, आज जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, चाहे एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं, चाहे वो एज ए इमिग्रेंट लाइक PR या वर्क परमिट के ऊपर आ रहे हैं, राइट. इन दोनों चीज़ों की इनको ज़रूरत है, और ये दोनों कोऑर्डिनेशन के अंदर चलती है. क्योंकि वॉलंटियर सर्विसेज एक ऐसी सर्विसेज है जो आपको एक मेंटली भी कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन देती है. एंड देन जो वॉलंटियर सर्विसेज है वो आपको आपके मेन करियर के अंदर स्किल्स को ऐड करने में भी हेल्प करती है. तो हम यहीं से शुरू करेंगे. आप मुझे पहले ये बताइए कि जैसे आपने टीम बनाई है, उसमें वॉलंटियर्स ऐड हुए होंगे. तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लगभग सभी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी सेम प्रोसेस रहता होगा वॉलंटियर्स को हायर करने का. तो ये एग्जैक्टली स्टेप वाइज प्रोसेस क्या है, अगर किसी को वॉलंटियर करना है तो क्या प्रोसेस है, कैसे अटैच कर सकते हैं? Paji, with us, there's actually no process. Okay. No formal process. ठीक है. मैं हमेशा कहना है कि जिदन भी तुसी उठो ना सवेरे and you wanted to do something, just come on in. Okay. And so जिदा तुसी दस्या स्टूडेंट्स वास्ते, it's very very important. जी. You know, it gives you networking, it gives you leadership skills, it gives you social skills, and on top of it, mental health. You know, it gives you a satisfaction कि यार मैं कुछ कीता हैगा, मैं अपनी सोसाइटी वास्ते कुछ कीता हैगा. पढ़ाई तो करनी of course as a student when you're coming, है ना, international student, पर it gives you a satisfaction कि यार मैं कुछ ਕਿਸੇ ਦੀ help ਕੀਤੀ ਹੈ. and ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, lot of suicide cases happening these days, lot of. but if you are like, I can tell you ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ volunteer ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, and we are proud to say oh kids now we can see they're going into the university. Okay. So there are very less chance कि वो गलत पासे ਨੂੰ ਜਾਣ. Mostly they, of course ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, but the chances are good chance कि they will follow the right direction, right path. 100%. They, you know, and again, joining us, they just follow our social media. Okay. We have a WhatsApp group और they 300 बंदे volunteers हैं कि है. तो ये जो लिंक्स हैं सोशल मीडिया के वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल दें. जी. ठीक है. और अगर लेट्स से कि कोई कांटेक्ट करना चाहता है वॉलंटियर करने के लिए, तो देयर इज नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? No eligibility, any age. You know, when we went to, I want to take you back to, take our listener back to 2016. Okay. When we started this initiative. Okay. 2016 December 9th. ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ we went to Ottawa mission. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਲ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ. And we went there to make sandwiches. Okay. And we have a lot of kids. ਉਹ ਹੁਣ ਬੱਚੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਿੱਡੇ ਦੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ, you know, 7-8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ. And you feel ਕਿ ਯਾਰ, you know, the kids are going to the right direction. These things count. So anybody can volunteer and doesn't have to be, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ, what we trying to do is we trying to change the mindset. You don't have to volunteer with us anywhere in the world. ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਜਾਪਾਨ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, you know, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਸਟਾਰਟ ਹੈਲਪਿੰਗ, ਵੋਲੰਟੀਅਰਿੰਗ ਵਿਦ ਦੈਮ. ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੌਸਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ. You know, we live in a Canadian society which is you know, religious neutral basically. You know, ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ. Same thing we kept in U Foundation is everybody can come in from
kids from 4 year to anybody. भाजी आई अंडरस्टैंड कि देखो सेवा भाव के लिए तो आदमी वॉलंटियर करता ही है, लेकिन जैसे हम जैसे कंट्री कनाडा के अंदर हैं तो यहाँ तो लोग प्रोफेशनली भी सीरियस लेते हैं वॉलंटियरिंग को, राइट? तो जैसे मान लो कोई आपके साथ जुड़ता है, काम करता है वॉलंटियर, तो उसको कोई सर्टिफिकेट भी मिलता है इस चीज़ का? Yes, we can do that, Paji. ओके, तो वो अपने रिज्यूमे के अंदर भी इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। 100% they can write. आपको क्या लगता है करियर वाइज ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं, है नहीं, या नहीं, फिर पाजी, हाउ नहीं। इम्पोर्टेंट इट इज? Soft skill, which includes save a volunteer, is just like ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, any single profession you wanted to pick, they look at who you are as a person. Education is the second thing nowadays, right? So if you ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, sure, ਮਾਸਟਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ 100 ਬੰਦਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 100 people are putting their resume, right? What is making someone more basically ahead is the soft skill, volunteer activity, है ना? कि यार ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ volunteer ਕਰਦੇ ਹੋ right away ਉਹ hiring manager ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ okay ਯਾਰ ਇਹ socially active ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ, he has leadership skills, he has the work ethics basically, he's getting up and doing something, he has right? Compassion, right? So these are very like especially in Canadian society, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ਮੀਆਂ 100 ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਜ਼ਮੀ ਉਹੀ ਕੱਢੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ सॉफ्ट स्किल या कोई वॉलंटियर एक्सपीरियंस। इवन अभी लास्ट पॉडकास्ट में कश्यप जी से बात हो रही थी, उन्होंने भी मेंशन किया था, यार मैं हमेशा बोलता हूँ इस चीज़ को कि ये जो सॉफ्ट स्किल और कम्युनिकेशन वाला सेगमेंट है ना, ये सबसे ज़्यादा अंडररेटेड सेगमेंट है। बच्चे जो नए आ रहे हैं ना वो इसको सबसे ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। उन्होंने भी मेंशन किया, बोले कि आपने यूनिवर्सिटी पढ़ा, ठीक है, टॉप ग्रेड लिए, जीपीए आपका जो है वो हाई है और टॉप ग्रेड है, तो बोले उसको रखो साइड में, आप अपनी स्किल सेट की टॉप भी नहीं बॉटम 5 स्किल भी अगर आइडेंटिफाई करने लायक हो ना, देन यू आर रेडी फॉर द गो मार्केट। अदरवाइज तो वेयर आर यू, आप क्या कर रहे हो, कुछ ग्रेड लेने से कुछ नहीं होना। स्किल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। वॉलंटियर इवन जिवें हुण 10वीं 10th ग्रेड हाई स्कूल in order to get a high school diploma here, you need to have at least minimum 40 hours volunteer, right? Okay. And 40 hours can easily done, right? But the thing is you want to make sure you're actually helping somebody. You're building your confidence and compassion, right? Not just किसी को जाके ओ जी फर्जी हो गया जी, नहीं आए नहीं, पाजी एक छोटा सा क्वेश्चन है बीच में, ये आपने एक ब्रोच लगाया सर यहाँ पे। Aji, Paji, I wear this very proudly. This is a Canadian Blood Services badge. So ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, I connect ਕੜਾ with this blood services. Okay. So ਕੜਾ ਵੀ endless ਹੈਗਾ, circle, right? And same thing with Canadian blood services, ਇਹ ਵੀ endless ਹੈਗਾ। So I went to a conference. They invited me about 5 years ago in Toronto. So actually ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ Canadian Blood Services ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ immigrants ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੇ, and they didn't have a lot of kind of background about South Asians. Okay. So they invited me to kind of share how we culturally grow up and all that, it was a conference, 2 days conference, and since then, since 5 years, Canadian Blood Services improved a lot. They hired South Asians now because of the involvement from the South Asians. But back then there was none basically. So although they invited me, and that time they started new branding, this one, and they gave me this badge back then. That's nice. I'm happy that आप आज wear किया आपने इसको। इट्स अ गुड मैसेज, क्योंकि ये स्क्रीन पे एवरी सेकंड दिखाई देगा, सो दिस इज द बेस्ट मैसेज वी कैन गिव टू द पीपल। दिस इज गुड। पाजी, जब भी मैं किसी गेस्ट को बुलाता हूँ ना तो थोड़ा उस पर रिसर्च करता हूँ जी, चीज़ें ढूंढता हूँ कि क्या था, कैसे किया, क्या क्या चीज़ें की। तो अपार्ट फ्रॉम योर प्रोफेशन एंड दीज एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स जिसमें आपको ऑनरेबल चीज़ें दी गई हैं, गेस्ट बुलाया गया है। इवन जो कनाडा में जब कोई कैनेडियन सिटीजन बनता है तो एक सेरेमोनी होती है। आजकल तो मोर ओवर वो ऑनलाइन हो गई है, कुछ जो है वो फिजिकली भी होती है।
तो आपको उसमें भी एज ए गेस्ट स्पीकर बुलाया गया, जो अपने आप में एक बड़ी बात मानता हूँ मैं, कि बीइंग अ साउथ एशियन गाय और इवन इंडियन गाय, उस सेरेमनी में जिसमें मल्टी कल्चरल सोसाइटी से बंदे होंगे, पीपल होंगे, कोई यूरोप से होगा, कोई मे बी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से होगा, तो वहाँ एज ए गेस्ट आपको बुलाया गया था। तो उस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताओ कि वो क्या एक्सपीरियंस था। It was pretty heartwarming क्योंकि ना ਉੱਥੇ 18 ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। वाओ 18 from 18 countries, new immigrants, you know, from Haiti to Philippines to like 2-3 ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ mostly non-Indian ਸੀ ਕਾਫੀ। And it's a heartwarming, you know, ਕਿ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, you know, and now they invited me. So it's बिल्कुल बिल्कुल भाजी, कनेक्शन, या आई कैन फील दैट। you know, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਓਥ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। So it's a bit heartwarming, you know, these things. बिल्कुल। You want to have water भाजी? No, I'm good. नहीं बिल्कुल, मतलब कि तभी आई वाज लाइक, यू नो, जब मेरा काउंटर हुआ इस इंफॉर्मेशन से, आई वाज लाइक वाओ, व्हाट अ प्राउड मोमेंट मैन। आई मीन people see things from a very low vision, right? Even people, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि people never dream of these things कि मैं कभी यहाँ पर एज ए गेस्ट जाऊँ भी का, सोचते भी नहीं है जिस चीज़ के बारे में, वो चीज़ हमारे कम्युनिटी किसी बंदे ने के साथ हुई है। सो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर होल कंट्री। It's more proud for the community than me, क्योंकि मैं अपने आप ਨੂੰ I don't जी deserve it, right? I don't think I deserve that much. You know, it's more proud for the community. That's right. क्योंकि ਜਦੋਂ community ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। That's right. Like, right, जी community थल्ले है ना, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਆ। Doesn't matter how good we do. बिल्कुल जे community ऊपर जा रही है ना, the end of the day is raise, you know, community ਉੱਤੇ जानी चाहिए। Exactly, क्योंकि जब आप कम्युनिटी को ऊपर पहुंचा रहे हो, then you are making your future generations more safe. क्योंकि आप तो यहाँ हो 20 साल 30 साल 40 साल, आपकी फ्यूचर जनरेशन को सेव करने के लिए। एंड ऑफ द डे भाजी, वी आर जस्ट ए, यू नो, एज ए ट्रैवलर, वी आर ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਦ ਆਈਡੀਆ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉੱਪਰ ਜਾਵੇ, ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਉੱਪਰ ਜਾਣ, ਅਗਲਾ ਕਹਿਣ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ, ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਕਾਊਂਟਸ, ਰਾਈਟ? ਇਹ ਬਰਾਊਨ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ, ਯੂ ਨੋ, brown. As I said, 26 years ago, it was very hard to even see a brown people. That's right. So, जिन्नी अपनी community उत्ते जाओगी, उन्नी आप सारे जावांगे. You know, at the end of the day, you know, Chander Bhai, कि you know, but on the other side, you know, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ, you know what, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣਾ ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, you know, but no. ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਿੰਪਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, they do that same thing too, because you already set an example, right? ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੇਟ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ? ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਆਤੀ ਹੈ। तो दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग, लाइक इट्स नॉट रॉकेट्स, यू नो। कितना प्यारा मैसेज है पाजी, मतलब नॉर्मल सा है कि लेट्स से कि कई बार क्या है कि हम हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं, कोई अनबन सी हो गई, कभी एक ने वॉइस रेज कर दी, राइट? वो सेम चीज़ विद इन अ कपल ऑफ डेज मेरे बड़े वाली बेटी छोटे वाली बेटी के ऊपर कर रही होती है। आई वाज लाइक व्हाट, मतलब कि जो सेम सोसाइटी के अंदर है, जो आपने भी एग्जांपल लिया, और ये छोटे छोटे मैसेजेस इतने मिस हैं आज के दिन सोसाइटी में। इसी बात से भाजी मैं इस बात को ना एक्सटेंड करूँगा, अब मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करेंगे थोड़ी सी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इवन अभी तक तो क्या है कि हमें दूर की सिटीज़ से सुनने को मिल रही थी चीज़ें, लाइक कि ब्रैम्पटन में या सरी या वैंकूवर के अंदर क्या है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनके सुसाइड केस ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही हैं। अब तो हमारी सिटी के अंदर भी हो गई है, ठीक है, हमें भी अब सुनने को मिल रहा है कि भाई हमारे ओटावा सिटी के अंदर भी ये चीज़ें होने लगी है। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि क्या आपको लगता है कि आज के टाइम पे मेंटल हेल्थ इशू ज़्यादा हो गए हैं? बिल्कुल है। तो क्या रीजंस इसके समझ में आ रहे हैं? क्योंकि अगेन वी आप ओवरनाइट सेटल होना चाहते हैं,
You know, when we came to Canada or you came to Canada, the time was different. Apa sare holi we were going step by chote steps, right? So hun ki hai ki we wanted to you know, ek ta hate wad gaya hai. They wanted to, you know, the new generation wanted to be, I don't know, you could say because of the phone, internet and all that, they wanted to be rich overnight, right? And all these are somehow putting a impact on your mental you know, on your mental health, you know. Social skills, friends nahi hai the aake, you know. And even when we came, of course, we didn't, you know, we had a family, but it was not like, you know, what we had, whatever we left in India, right? So holi ki hai ki oh change ho raha hai Ottawa de vich. So I'll tell you, in 2017, when we organized the first mental health workshop, Okay. I invited, it was a collaboration. We do a lot of work with Ottawa Public Health. And so we are kind of, you know, their preferred partner right now, especially with South Asians. So, you know, what happened is, udo na apna ek student siga, unhe suicide kar liya siga. Okay. Bayshore de vich. Bayshore jehda parking lot hai. And when I heard that news, it hits me. Even though I didn't know that person, right? To me, it was just a South Asian koi banda siga, you know. It was, I don't even know who or the kaun siga. But the idea was that ki community appa inna bhi nahi kar sakde. We can't, like, we should be capable to handle all these newcomers, new international students, you know. We are capable. We just have to do it. Right? So udo ki aaya, then I reached out to Ottawa Public Health. I said, you know what, we wanted to do something. And then they said, yeah, no problem. And since then, we've been collaborating for the last 6-7 years. And recently, Paji, I wanted to share with all the listeners too, especially in Ottawa, we started a new program, Youth Peer Support. Yeah. So we did 2 sessions so far. And it is again with the collaboration with Ottawa Public Health. And all the youth, including international students, they're welcome to join. They're welcome to learn those skills. And what we're trying to do is teach them how to self-care and also how to identify if someone else is going through these mental health issues, what to do, like if there's any suicide or if someone is thinking about suicide, how to do. A lot of people, I can tell you, Paji, कि जदों ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, this is something, you know, more off the track, but I'll share. But a lot of people were not excited on these things. Yeah. And ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ even today ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ. We don't want to share this information, give this information to our own kids. But they're forgetting ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਦੂਜੇ, you know, students ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਆ. These things are important. So that's why we started this youth peer support program, which we will run, and then other session, the new training is coming March. We haven't fixed the date yet, but it'll be around March, mid-March. बिल्कुल ठीक कहा भाजी आपने. इवन स्पेशली जो हमारी कम्युनिटी बैकग्राउंड से जो आ रहे हैं ना, स्पेशली इंडिया से और सब कुछ, वो ना मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं. इवन मैं कई बार एक्सप्लेन करता हूँ, आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीवन फॉर दीज वर्ड्स, बट वो एक अच्छी एक्सप्लेनेशन लगती है मेरे को मेरे तरीके से. हम लोगों ने चाहते ना चाहते हुए ये जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ है ना, इसको गुप्त रोग की कैटेगरी में डाल दिया है. बिल्कुल. यू नो कि गुप्त रोग कहाँ से शुरू हुआ था कि जिसके बारे में आप बात नहीं करना चाहते, इसलिए उनको गुप्त बोला गया. राइट, यू अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, राइट? तो हमने उसकी कैटेगरी में डाल दिया इसको. हम बात ही नहीं करते, हम अपने क्लोज फ्रेंड से बात नहीं करते इसके बारे में. तो जब तक बात नहीं करेंगे तब तक वो पता कैसे चलेगी हमको चीज़ें. तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि इवन पेरेंट्स नहीं चाहते कि अपने बच्चे को इन चीज़ों को. पाजी, आपने टुवर्ड्स द बिगनिंग एक क्वेश्चन किया था
कि if I have a personal जी issues, जी जी I can tell you, जी ये सुपिंदरजीत है ना जो आपके सामने बैठा है, 2012 में मैं रॉयल ऑटवा जो मेंटल हॉस्पिटल है ना उसके पार्किंग लॉट में बैठा था, जी दिसंबर का महीना था, जी because I was on struggling with these things, you know. And what I noticed is I wanted to raise this through your YouTube channel. कि in our society, and especially in South Asian, we do have something called family bullying. We don't recognize, we don't talk about it, we just shovel it under the carpet, Correct. you know, just जिमें कूड़ा बिल्कुल अंदर पा बिल्कुल देने हैं बिल्कुल but we don't talk about these things. And these things are very important to me. एग्जैक्टली And so what happened is if you start talking about these things, maybe people will not going to talk to you. But that's okay. या Because you wanted to, instead of pleasing one person, you want to save 1,000 other lives. दैट्स राइट देयर यू गो You know, you have to pick your battle. या या Even when we na, even आज दी dates भी last month we had that the youth peer support program, you know, the session, and there was 2-3 families called, and they no, we don't want to send our kids to your this program. It's a mental health. He has no issues with the mental health. No, we're not saying your kid has a mental health issue. We wanted to make them a leader so that they can help other people who are struggling with these वी things. वांट टू You मेक know? हिम एन एजुकेटर Exactly. Especially अपने साउथ एशियन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, या या you know, ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚਾਹ ਪੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਲੈ. कि लोग मजाक उड़ाएंगे बुलिंग करेंगे हाँ. But the thing is, more you have to talk, and now especially in Ottawa, our population is growing. And this is a very important topic. Like we do every yearly event, we do suicide prevention safe talk workshop. So हर एक बंदे को ना attendees को free है, दैट्स गुड certificate मिलता है end में, and they can put it in their resume that they have done this training. नाइस And again, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ international students and when they apply, these things count because दूसरे जो 100 बंदे अप्लाई कर रहे हैं उसके पास वो सर्टिफिकेट नहीं होगा. एग्जैक्टली नहीं होगा परफेक्ट 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 पाजी थैंक यू फॉर शेयरिंग योर ओन स्टोरी विद अस मोर पावर टू यू थैंक यू जी. तो पाजी ये मेंटल हेल्थ वाला मैंने इसलिए भी टॉपिक बीच में डाला क्योंकि रिसेंटली क्या है कि मेरे को ये चीज़ें भी सामने आई कि इवन स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आपने जैकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किया एंड ग्रोसरी एट लो प्राइसिंग वो भी वो शुरू किया कि कहाँ से लेके आते हो आइडियाज आप मतलब दे आर वेरी यू नो सपोर्टिंग थिंग बिलीव मी क्योंकि एज ए स्टूडेंट ग्रोसरी के रेट देखो प्राइसिंग कहाँ जाके पहुंची है तो कहाँ से आते हैं आपको पास यार चंद्र पाजी, to me it's not a matter of one meal or एक आटे का बैग और एक जैकेट. To me what's important is that being there for someone else. ठीक है. Oh, it's not a matter of ਜਿਹੜਾ $20 ਦਾ ਆਟੇ ਦਾ bag ਹੈ, that just is nothing. To me is just when someone is struggling, someone is alone, someone is missing their family, someone is going through mental health, someone is going through different thoughts, could be just cultural shock or barf the shock or winter the could be anything, could be just a housing, not able to get the house or not able to maybe at the school their kids are bullying, their friends are bullying, could be anything. You are there to listen to them, just being there. That's more important than that $20 ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ grocery ਦਾ bag ਹੈਗਾ. Nice, just being nice, there. nice, That's nice, more important than anything else. wow so many talks पाजी पता ही नहीं चल रहा है टाइम दौड़ रहा है भाग रहा है उड़ रहा है हमें 1 घंटा हो गया बैठे यहाँ पे बात करते हुए और अभी भी इतनी सारी चीज़ें हैं मेरे पास. अब हम ना एंड की तरफ जा रहे हैं पॉडकास्ट के सो आई विल क्विकली वाइंड अप कपल ऑफ थिंग्स जिसमें सबसे पहले तो क्या है कि पाजी कि जब हम ये सोशल सर्विसेज की और सब चीज़ों की बात कर रहे हैं ना इनका ना बात करने से ही इतना अच्छा लग रहा है
समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और जब हम इसको करेंगे तो ये कितना हमें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इम्पैक्ट डाल सकता है, आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। जैसे आपने अपनी स्टोरी शेयर की ना कि भाई आप भी इन इश्यूज से गुजरे और सब कुछ है, Yeah. एंड यू आर लीडर, कम्युनिटी लीडर राइट नाउ, यू नहीं आर नहीं, लीडर ਤਾਂ ਭਾਜੀ इंस्पायरिंग hundreds of people every day, ਲੀਡਰ ਤਾਂ right? ਭਾਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਮੈसेज ਕੀਤਾ कि we wanted to interview you जी जी और मैंने आपको जवाब दिया, मैं जी कहा जी भाजी कोई मैं तो एक छोटा सा बंदा हूँ, कोई जो बड़े लीडर हैं कम्युनिटी के उनकी इंटरव्यू अरे करो, नहीं नहीं भाजी, you know. तो मैं एक चीज़ यहाँ ये मेंशन करना चाह रहा था कि इस तरह के इश्यूज के बाद जब बंदा ना उभरता है ना, तो हम डेफिनेटली श्योर कि आपके पास कोई ना कोई ऐसी हॉबी जरूर रही होगी जिसने आपको हेल्प किया होगा इससे उठने का। कि मैं डेफिनेटली इसलिए भी मेंशन करना चाह रहा हूँ क्योंकि जो लिसनर सुन रहे होंगे ना उनको भी एक पॉइंटर मिल सकता है इस चीज़ से कि देर आर फ्यू थिंग्स जिनको आप करोगे तो इन चीज़ों से ऊपर आ सकते हो। सो मेन थिंग इज भाजी पैशन इन योर सेल्फ। अगर आपके पास अंदर पैशन नहीं है ना, you will burn out in a day, you'll burn out in a week, you will burn out in a month. You know, you need to have the passion inside, burning passion, like every day. तभी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, you know, and yeah, कोई ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर काइंड ऑफ एक्टिविटी आप कभी करते थे जिसने आपको हेल्प किया इन चीज़ों में भी? So, you know, I'll come back to Guru Nanak Sahib. You know, we are very lucky to brought up in India. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, and you know we ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ it was just a normal process, going to the Gurdwara Sahib or you know helping somebody if somebody is, you know, even here when I came to Canada, ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਈਡ ਲੱਭਣਾ, I usually stop my car and say, hey, do you need a ride? You know, these small things. But again, always thinking about these compassion, right? So ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਡੈਡੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, right? And we were just following him ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, you know, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, and then we started doing seva. Then again, I'll come back to that one thing was missing which I wanted to promote is the mental health during seva, by doing seva, and also include all the religion, just not make, you know, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਨਾ ਭਾਜੀ, I met somebody else and ਗੋਰਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ this ਨਾ our church is collecting some food items for the you know Christmas time. ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੇਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, you know. To me was, it's great, but why don't we should be all able to work together instead of just dividing by religion. ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੇਅਰ ਪੈਕੇजेस ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, this is going from this. No, we all are human and we should be able to work together. Okay, that's nice. तो एक मैसेज ये भी है कि whatever we are, I mean you as a foundation are doing is not for just one kind of community. It's going everywhere, right? Yeah. It's a good message. You know, मानस की जात सबे एक के पहचान वो, you know, 2 ਮਿੰਟ ਲਊਂਗਾ, I know your time is going. ਤੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਟੋਰੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਈ ਉਹ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆਈ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ, you know. ਤੇ ਫਿਰ then ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, that's where the first aid started, you know, the Red Cross. ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਫਸਟ ਏਡ ਦਾ ਡੱਬਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਟੀ ਵੀ ਕਰ ਦੇ, you know. That was the concept, like where we brought up from, right? So we just need to share it. That's it. That's the devotion. आप किसी एक कंसेप्ट में अगर डिवोट करते हो अपने आप को,
इट मेक मिराकल्स। दैट्स नाइस पाजी। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। अब हम ऑलमोस्ट एंड में हैं पॉडकास्ट के, तो मैं आपकी एक दो अचीवमेंट्स को थोड़ा हाईलाइट करूँगा, वो जस्ट फॉर दैट कि मुझे वो एक्सपीरियंस जानना है, क्योंकि जब हम उस एक्सपीरियंस को सुनते हैं ना तो और लोग मोटिवेट होते हैं, जब तक हमें पता ही नहीं उन चीज़ों का। तो आई केम क्रॉस फ्यू थिंग्स, जैसे ओंटारियो वॉलंटियर अवार्ड आपको मिला, इवन ICOBC का जो वॉलंटियर अवार्ड है वो भी आपको मिला। तो इन अवार्ड्स के बारे में हल्का सा कुछ बताओ क्विकली कि ये अवार्ड हैं क्या, और देन व्हेन यू आर इनवाइटेड फॉर दैट तो वो फीलिंग क्या थी? ਭਾਜੀ ਇਹ ਅਵਾर्ड जो ओंटारियो गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो दिंदी हैगी है वॉलंटियर सेवा के लिए जी। और सेम थिंग विद ICOBC जो अपनी ऑटवा की लोकल ऑर्गेनाइजेशन हैगी है वो वॉलंटियर्स के लिए अवार्ड दिंदे है। यू नो इट्स बेसिकली अ रिकॉग्निशन एंड आई डोंट थिंक I'm you know मैं ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ you know even eligible but you know some of the community members they nominated. Wow. And you know it was a you know ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਭਈ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ and believe me I was crying. Not because कि award मिलना है, I was crying कि मैं capable नहीं हैगा. Okay. And for many days I went to Gurdwara Sahib, मैं कहा Guru Sahib I'm not capable you know for this award. And I was so close to say no क्योंकि I don't think I need a recognition you know. But then few community leaders they said नहीं सुपिंदर सिंह ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ. It motivates other people. That's right. And showcase our South Asian you know on the stage. So it was a little bit tough. From inside I think it was tough for me. You know same thing last year with ICOBC. It was kind. They recognized as we got two awards last year. One as a team, Langar for Hunger. Yeah, definitely they are big achievements. और मुझे personally ऐसा लगता है जैसे आपने explain किया ना exactly same कि these awards are not important for you. These are important for other people when they see you going and taking these kind of awards for the community, for the community services, not for something which you have achieved. This is for something you achieved for the community. Whenever Pari, I leave the door in the morning, leave the house, you know, I don't walk. When I go out, I don't think Supinder is walking. I'm taking whole community. And that's how I you know, I wanted to, you know, tell everyone, you know, when you are, doesn't matter, you're driving, you're working, doesn't matter what you do, day-to-day activity, going to a grocery. Act as a humble, compassionate human being, you know. So ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਊਨ ਬੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ you know ਇੰਡੀਅਨ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ. ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ of course then they're gonna say ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਲਫੰਡਰ ਰਹੇ ਹੈ, you know. So we need to showcase ourselves. We all are ambassadors. Whenever, doesn't matter, you know, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ everybody are ambassadors. People are looking at us as a you know, of course immigrant, we all came as a immigrant, you know, but as a, you know, South Asians, Indian, Punjabi, you know, especially pag wala ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ recognize ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, you know. So if we do something bad, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਆ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, you know. So क्योंकि दैट इज राइट, क्योंकि एक उस ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अगर देखें तो यू नो इंडियन डायस्पोरा जो है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, राइट. तो व्हाटएवर वी डू इज़ वेरी लाउड. वो तो पता चल जाता है कि भैया इंडियन लोग ऐसा कर रहे हैं. तो यू आर करेक्ट फाजी. बहुत सारी टॉक्स अभी रह भी गई हैं, बहुत सारी बातें हमने की, दिल को छूने वाली बातें भी की हमने, कुछ प्रैक्टिकल बातें भी की. ये था हमारा आज का पॉडकास्ट फाजी. आपको कैसा लगा फाजी? वेरी गुड जी. और मुझे लगता है कि एक दिन आपकी इंटरव्यू मुझे करनी पड़ेगी, आपको यहाँ बिठाना पड़ेगा, क्योंकि इट्स अ लॉट ऑफ वर्क पाजी यू डू. लाइक आ लाइटा लगी हुई हैं जी, आ लाइटा चिट्टियां पीछे, यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू सेट अप. 2-3 कैमरे लगे हुए हैं. सो मे बी वन डे यू कम हियर एंड आई विल सिट ओवर देयर. फॉर श्योर पाजी, बिल्कुल. तो इसको बिल्कुल अंत में ले जाएं पाजी. उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप एक मैसेज दें
और यूजुअली मैं ना ब्रॉडर ऑडियंस को कैटर करता हूँ, फिर बोलता हूँ, लेकिन आपके लिए मेरे पास एक स्पेसिफिक ऑडियंस है बाजी जिसको आप मैसेज दो। स्पेशली ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और न्यू कमर्स जो आज के टाइम पे आ रहे हैं, वो दो चीज़ों से ना बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। एक उनकी जॉब हंटिंग, दूसरी उनकी जो ना महंगाई देखते हैं या लोगों की दूसरों की ग्रोथ देखते हैं और फिर देखते हैं कि वी आर समवेयर डाउन, तो वो ना मेंटल हेल्थ से कनेक्ट हो जाती है। तो ऐसे न्यू कमर्स जो एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं या दूसरे वीजाज पे आ रहे हैं, उनको फोकस करते हुए आप उनको क्या मैसेज दोगे? कोई 2 लाइनर 3 लाइनर, तो प्लीज़ ग्राउंड इज योर्स बाजी। I would tell them, all the international students, or especially the newcomers, and everybody, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕਿ don't stress out. Time is important. Work hard, and I'm sure within a couple of years you will achieve your dream. Canada is such a Canada ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ country ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ we've been here for over 100 years, right? So ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ dreams achieve ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। Yes, maybe it will take a year or two, but you will achieve. But at the end, I want to say you're being loved. You know, love is very, very important. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ ਨਾ, and universe will come and guide you and pick you up wherever you want it to go. You know, don't hide a hate in your heart. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ, universe will guide you, pick you up wherever you want. So love each other. That's the most important. Humanity, that's more important than religion is. Wow, thank you so much Paji for this lovely message. और इसी के साथ मैं इस पॉडकास्ट को यहाँ फिनिश करूँगा। आपका एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया टाइम देने के लिए और इतनी प्यारी बातें करने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन। यू आर वेलकम बाजी। सो गाइज, ये था आज का बहुत ही प्यारा पॉडकास्ट जिसमें हमने कुछ ऐसी बातें की जिसको इवन मैं भी फॉर ग्रांटेड लेता हूँ। तो आज ये टाइम ऐसा है जब हमें इन चीज़ों के बारे में बात करनी है, चाहे वो हमारी मेंटल हेल्थ की बात हो, चाहे वो हमारे आसपास के लोगों की मेंटल हेल्थ की बात हो। इसकी बात करना बहुत ज़रूरी है और इसको हमें प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को तैयार करना पड़ेगा कि आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के पॉडकास्ट को विराम देता हूँ। आपको हमारी एक हेल्प करनी है, इन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पॉडकास्ट को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के सभी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस पॉडकास्ट ने एक भी ज़िंदगी में चेंज ला दिया तो हमारा इस पॉडकास्ट को करने का मोटिव पूरा हो जाएगा। तो फाइनली इन्हीं बातों के साथ इस पॉडकास्ट को विराम देता हूँ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नए गेस्ट के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी सेहत अच्छी रहे और आप निरंतर प्रगति करते रहे। जय राम जी की।